More than 150 lives snuffed out. Just like that. Had this been any other country, heads would have rolled. People in positions of leadership in government would have had to publicly apologize and resign. But in India, perhaps human life does not have much value. More so the lives of children. So when the largest bout of acute encephalitis syndrome struck the district of Muzaffarpur in Bihar, it was almost an anticipated event for the powers that be, with the establishment perhaps having reconciled itself to the loss of lives which have been a cycle in the state since 1995. This man, Nitish Kumar, has been in power in the state since 2005. He knows that there has been an outbreak of encephalitis twice every year for almost a quarter of the century in Bihar now. He was the chief minister when 143 lives were lost in 2013. And is the chief minister now, with the lives of at least 156 children and their families destroyed through no fault of their own. This man, Harshvardhan, was the Union Health Minister in 2014. He had made a slew of promises for Bihar back then, having discovered how inadequate the medical infrastructure in the state was that year when more than 350 children died. The promises included a 100-bed super specialty facility which still remains incomplete, a 10-bed special facility for the treatment of children, and dedicated surveillance systems to tackle the outbreak. Big talk, hardly any follow-up, and another tragedy. This entire hospital that caters to practically the entire region has 3 pediatric ICUs, and the story behind the newest ICU is extremely interesting. कब बनाया क्या ये ICU? ये जब बच्चे की मरने की संख्या बढ़ने लगी तब ये स्टोर रूम था पहले, मतलब गोडाउन था। ये मेडिसिन रखी जाती थी यहाँ पे। तब इसके बाद इसमें एसी लगा करके और बेड लगा करके इसको ICU बना दिया। तो मतलब पहले सिर्फ 16 beds were all that this hospital had by way of an ICU. It is after the death toll that started going up that this fresh ICU was made, which has another 8 beds in it, which mind you means that the total capacity in terms of beds is only 24. How many children are admitted in this hospital alone at last count? Over 400. Can you imagine then what the ratio is like? The biggest irony is that this is the same place, the same hospital where 5 years ago a promise had been made of a 100-bed hospital to be opened. Now there are only 24. Who's responsible for the deaths that happen in the interim? You decide for yourself. When responses were sought, pressing questions asked about the failure to prevent or minimize the suffering, there was callousness. I have told everything. Evasiveness. So the situation is getting better, sir. Harshvardhan, sir. Sir. People are dying. People are dying in Bihar. And just a plain refusal to answer. सर एक मुजफ्फरपुर पे कुछ कहिएगा सर, जिस तरीके से बच्चों की मौत हो रही है, जिस तरीके से वहाँ बच्चों की मौत हुई है, विल समवन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर? आपको बता दिया ये बैंकर समिति की बैठक है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल इसी विषय के लिए आयोजित की गई, इसलिए बैंक से जुड़े मुद्दे पर अगर आप पूछेंगे तो हम जवाब दे पाएंगे। इसके अलावा कोई विषय होगा उसके लिए अलग से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी
वहाँ उसका जवाब दिया जाए। सर अभी देश का मुद्दा यही बना हुआ है सर। ठीक है, अभी मामला नहीं है, ये बच्चे का मामला है, बच्चे का उनको आपको इसके बारे में पूछना हो तो पूछे, नहीं तो इसको खत्म करेंगे। सर कुछ तो बोल दीजिए सर, जो 150 डेथ हुए हैं सर उसमें कुछ तो बोल दीजिए सर। सर किसको कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस विषय पे कुछ तो बनता है, बच्चों आगे जाइए तो आगे सर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जिस तरीके से वहाँ बच्चे मर रहे हैं। पानी की सरकार सोई हुई थी, ना स्वास्थ्य विभाग जगह था। जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो क्रिकेट मैच का स्कोर पूछ रहे थे सर। ही वॉज बिजी विद द क्रिकेट मैच। सर कुछ तो बोलिए सर। सर कुछ सर आप तो सब चीज पर बच्चे मर रहे हैं सर, आप शांत रहो, कैसे रह सकते हैं सर? आगे चार बच्चे मर रहे हैं सर, आप शांत रहे कैसे रह सकते हैं? ये बच्चों की बात है सर, कुछ तो बोलिए। सर गरीब बच्चे हैं सर, कुछ तो बोलिए सर इस विषय पे। बैंकर्स की जगह सर डॉक्टर से मीटिंग कर लेते सर। We kept on asking him questions, but no, not a single answer from him on the death of more than 100 children. Now this shows the apathy, this shows how negligent they are, this shows that how they have no care for the small children who have lost their life. Sir, कुछ तो बोल दीजिए sir. You were having khasta kachori and pulao for lunch, sir. Children there are not getting proper food as well, sir. So will you say something, sir? सर आप लोग यहाँ होटल में कचौड़ी खा रहे हैं। अरे कुछ नहीं सर, कुछ कहिएगा सर, आप कुछ कहिएगा सर। एक स्टेटमेंट से दे दीजिए ऑन द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन इन मुजफ्फरपुर सर। 150 चिल्ड्रन हैव डाइड। कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुई है सर, कुछ तो बोलिएगा सर। सर कुछ तो बोलिएगा इसमें, जिस तरीके से कोई नहीं। आपके स्वास्थ्य मंत्री क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर? आप यहाँ लंच कर रहे हैं सर, यू आर हैविंग लंच हियर सर, बट द चिल्ड्रन देयर आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड सर। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन सर। The politicians knew they had been cornered, but there appeared to not be an iota of a sense of moral responsibility for what has unfolded in the state of Bihar. The research into the causes of encephalitis is still ongoing, but what has compounded the problem in the state is the high level of malnourishment among children, which has made them more prone to infections. That apart, the sorry state of medical infrastructure in the state has meant that any measure geared towards successful prevention may prove inadequate. For a dispensation that has been in power in Bihar since 2005, and for the bulk of the duration as part of an alliance with the BJP, these numbers are an indictment. But this is also a symptom of a larger malaise, and that is the priority or the lack of it, according to healthcare in India. The centre's Ayushman Bharat scheme has only taken off now, and its success or failure still remains to be determined. But it is no secret that India has for long neglected healthcare. And last year, Bihar's expenditure on health was just 3.94% of its overall expenditure, the second lowest in the country. सवेरे 5 बजे लड़का जो सुता हुआ था उठा ऐसे ऐसे चौंकने लगा। वहाँ से लेकर रास्ते जाते थे ना, फिर रास्ते में डेट कर गया। As of 20th of June, 96 children had died at the Shri Krishna Medical College and Hospital at Muzaffarpur. क्या करते हो आप? खेती का काम करते हैं हम। खेती करते हो। कब एडमिट किया था बच्चे को? एडमिट मोटामोटी 4 दिन पहले। क्या उम्र है? मेरा 2 साल का। 2 साल की है। तो जब लाया था तब बहुत बुखार था और उसमें सीरियस था। नहीं सीरियस था, सीरियस हो गया। हाँ। क्या हॉस्पिटल में बराबर उन्होंने ट्रीटमेंट किया था? नहीं सर, उतना ट्रीटमेंट नहीं किया। क्यों लग रहा है आपको ऐसे? कौन सा? कि बराबर नहीं किया हॉस्पिटल में। क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत मतलब लोग आता था 2 मिनट के बाद में चला जाता, पूछता है तो जाएगा, हम बुलवा रहे तो करेंगे।
due to late presentation. Because every minute is a golden hour for a child. Suppose कोई पेशेंट बहुत 30-40 किलोमीटर से चले जाते हैं, कंटिन्यूस सीजर अटैक करते रहते हैं, तो दिस लीड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. वो तो हाइपोग्लाइसेमिया एंड हीट स्ट्रोक तो अलग हो गया. What about the facilities? There definitely seems to be lack of facilities as far as treatment is concerned. No. I deny this question. There is ample of facility. मैं कह रहा हूँ मेरे पास इतने वीडियोस हैं, बच्चे 2-3 घंटे में ठीक होकर गए हैं. जो बच्चे दिक्कत में वो लेट से आते हैं, होता है क्या, कभी कोई लोकल को एक्स दिखा लिए, 4-5 घंटे वहाँ चले गए, फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊँ वहाँ डायग्नोसिस नहीं कर पाए, इसलिए वो लेट प्रेजेंटेशन करने के कारण ही मैक्सिमम डेथ हुई है. Not long before the Bihar Chief Minister Nitish Kumar had visited the hospital, Times Now's Priyank Tripathi did a status check. On ground, you can see that the number of patients, the number of attendants is certainly rising. People are coming here with the hope that they will get a proper medical care. But what has changed on ground? Let's go and talk to those attendants who have been coming, who have been staying here since 2 to 3 days, and to know that whether the team has spoken. कुछ बतावे नहीं कि हम लोग से था कुछ. Bacha ward में. Let's go to the Bacha ward, the children ward, the ward for the children. CM साहब यहाँ पे. CM साहब यहाँ पे. हाँ आए थे. At least more than half a dozen of nursing attendants are here, and the doctors are also here. This ward is totally filled with white color. Nurses, attendants, doctors, everyone is here, which have been there late last night only. As of now, what I can count is that there are 8 nursing attendants inside, 7 nursing attendants outside. That counts to 15 nursing attendants, 3 doctors who are on the standby for the patients. Bedsheets have been changed to please the Chief Minister. Bedsheets and better medical facility is being shown on the ground for the Chief Minister. नीतीश बाबू आए थे, किसी से बात किया कि आप लोग साइड में पड़े हुए हैं? ना, हमसे बात नहीं. आप लोग साइड में बैठे हुए हैं, आगे नीतीश बाबू बात की है? ना. So literally very zero response from all those people who are here. And if my video journalist Imran would be able to show you the top angle view of this particular ward, you can easily see that how many patients come in. It's looking like that this is the most crowded place in this district. This is the state of this department, and this is the Shishu Rog Vibhag. That means this is a child specialty department, and more than the patients, the attendants are there. So are we going to bank on this healthcare development with this kind of infrastructure? It's the patients and the families, the children admitted, who have lost out. We spoke to people who prefer to remain anonymous, including a junior doctor and an ambulance staff member. The claims are shocking, but these are allegations that need to be verified to be declared true. तो रीजन क्या है? फंडिंग तो आती है फिर रेडियोलॉजिस्ट नहीं, डॉक्टर नहीं. हाँ. रेडियोलॉजिस्ट एक ही रेडियोलॉजिस्ट है, एक ही रेडियोलॉजिस्ट कितना बार काम करेगा? हाँ. तो यहाँ पे अच्छे से 10 का रेडियोलॉजिस्ट आएंगे तो डॉक्टर की बहाली में इससे नहीं हो पाता. समझिए हर स्टाफ का अपना अपना कुर्सी है. अब हम जो अल्ट्रासाउंड के लिए लिखेंगे बाहर करा के आओ, क्या बाहर गया वहीं से प्राइवेट दलाल से. डॉक्टर साहब कैसे करते हैं हम इसको? कल कैसे करें इसको? आप कहने का मतलब जो कम से कम जो बेसिक फैसिलिटीज है, जैसे अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी है ना, डिजिटल एक्सरे या प्लेन एक्सरे है ना, CT स्कैन तो प्राइवेट मोड पे है तो वो हमेशा 24 आवर है. ये सब हमने हम क्या बता, यहाँ एक छोटा स्टाफ भी है ना, क्लर्क भी है ना, तो सारे का नर्सिंग खुला हुआ अपना टेम्पो से चल जाता है. अपना जो व्यवस्था है वो से चल जाता है. कौन कौन? भवानी, गौतम, अनुपम, ये सब दिन के लिए. और रात को? रात में 0 माइल में करता है वो अल्ट्रासाउंड. वो भी एक आदमी का 24 घंटा खुला रहता है.
चाहे कोई हॉस्पिटल में हो जाता है, प्रसाद, माँ जानकी, ITM, ग्लोबल, 4-5 अस्पताल है इसमें। यहाँ के डॉक्टर लोग का कि अलग से? यही के डॉक्टर लोग का है, यही के डॉक्टर लोग का। प्रशांत कौन सा यहाँ वाले का कौन सा है? वो अरे भवानी है। हाँ। सुप्रिया मैडम है ना जो यहाँ अल्ट्रासाउंड करती है, हाँ। उनका भी CT स्कैन अल्ट्रासाउंड अपना है। अच्छा। रोड नंबर 2 के गेट पे। हाँ। जी माँ तो यहाँ 2 दिन करती है, शुक्र को और बुध को। हाँ। दिन बाकी दिन वही करती है। तो वहाँ तो पैसा ज्यादा लगता होगा। The horror of what has transpired in Bihar is also evident in the villages that some of the families hailed from. In Harivanshpur village in the district of Vaishali, dozens of families have fled, fearing more deaths due to encephalitis. The villagers had no option to leave this village in fear, and the reason is that the 2 deaths which have been reported from the right next house to this house, and we would like to show you that all these hut houses which are on my right hand sides are empty. Whatever means they could do to block their gate, because these are the poor villagers who don't even afford a proper gate. This is a makeshift gate which has been done by them. The houses are empty. There is clear indication that the poverty is another factor because of which they could not give proper aid to the children. तो घर है रंजीत राज जी। ये आप कौन है? ये मेरा भाई है। जी मैं और रंजीत जी जी ये दोनों अपने बच्चों को लेके यहाँ से चले गए? जी पटना में है। पटना में चले गए? जी। बीमारी नहीं हुई लेकिन ऐसे चले गए? नहीं, तबीयत खराब हुआ था। 2 दिन हॉस्पिटल में गए थे यहाँ सा, तो थोड़ा सुधार हुआ था। सुधार होने के बाद थोड़ा सा दवा लिया और यहाँ से चले गए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा समझ में आता है कि ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए यहाँ से निकल गए हैं। पहले से हमको तो बीमारी के कोई था ही नहीं लगा, चाहे कोई लोग के भी था नहीं लगा। एक बैग अचानक बीमारी आया। पहले से अगर बीमारी आता तो बच्चा कुछ 1-2 रोज पहले से बीमार पड़ता तब ना आदमी के अथी होता है। तो एक बैग आया, बच्चा सुबह रात में खाना पीना खाया, सोया, सुबह पर उठ के फिर खाना पीना खाया। खाने के बाद वो खेला बच्चा सबके साथ में। खेलने के बाद 10-11 बजे के बाद वो मलहुआने के शुरू हो गया कुछ 5-10 मिनट। उसके बाद मलुआ करके वो सो गया। सोने के बाद एगो उल्टी किया। कोई तारीख हो रही है? 15 तारीख के सवेरे 5 बजे लड़का जो सुता हुआ था उठा ऐसे ऐसे चौंकने लगा। वहाँ से लेकर रास्ता जाते थे ना, तो रास्ते में डेट कर गया। तो हम घूम के लिया घर पर। तो अस्पताल नहीं पहुँच? ना पहुँच पाए। कुछ आप लोग से बात हुई कि आप लोग को कुछ सरकार है, कोई राहत है? इतनी गरीबी में आप लोग जी रहे हैं। हाँ, तो ये कोई यहाँ राहत नहीं मिल रहा है सरकार से ना। Forget about the compensation. Even after the death, no one from the administration has come up to this small village of Vaishali to talk to them and give a brief detail about how they should live their life further. They have been living in this small hut in this extreme weather, which has also been responsible for the death of the minors. Among all the families who have lost more than hundreds of children in Bihar, the story remains the same and the misery is still continuing. What has happened in Bihar is a rerun of several such instances in the state in the past, as well as what Gorakhpur in Uttar Pradesh witnessed in 2017. But lessons clearly have not been learnt. The children of Bihar are unsafe. They are crying to be protected. If the deaths of more than 150 children does not compel preventive action for the future, we would be living in a heartless nation. Or are we already?